Good evening, everyone, and welcome in this book reading session. Good evening, ma'am. So let's start with book reading. दिख रही है मेरी स्क्रीन सबको? एक्चुअली बुक रीडिंग करने से क्या क्या हमें हेल्प मिलता है, एनी काइंड ऑफ बुक. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बुक्स पढ़ें. अगर आप और भी अपनी लाइफ स्किल्स से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हैं, या साइकोलॉजी, फाइनेंशियल, एनीथिंग, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ बुक. तो जो फर्स्ट इसमें बताया हुआ है, दैट इज इट शार्पन्स योर माइंड. So by concentrating on words and lines, it stimulates on your brain. So daily reading can help sharpen your mind as well, right? How many of you know that we have two sides of brain, left brain and right brain? पता ही होगा, है ना? और ये भी पता होगा कि एक साइड का ब्रेन हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं. जैसे जो राइट हैंड से लिखते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज होता है, और जो लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट रहता है. एम आई राइट? यस. तो क्या होता है ना कि अब देखो, कोई भी चीज अगर ईश्वर ने दी है, ब्रेन के दो साइड दिए हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ही साइड्स या दोनों ही एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे. तो हम तो एक ही तरफ यूज करते जा रहे हैं, दूसरे तरफ जो है वो निग्लेक्ट हो जाता है. तो जब आप स्टिमुलेट करते हो, चीजों को पढ़ते हो कंसंट्रेशन के साथ, तो आपके ब्रेन सेल्स भी डेवलप होते हैं. और एक चीज जो लेफ्ट और राइट ब्रेन की मैं बात कर रही थी, तो आप अपना राइट ब्रेन एक्टिवेट करने के लिए एक स्टेप ले सकते हो. बहुत सारी चीजें करने की का अगर टाइम नहीं है, तो आप मॉर्निंग में जब ब्रश करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड से आप ब्रश कीजिए. सो आपका जो राइट ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा धीरे धीरे. सो या फिर टाइपिंग करते हैं तो कभी लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लिखने की क्योंकि आदत नहीं है, लिखते नहीं है आजकल, तो सब व्हाट्सएप पे ही टेक्स्ट लिखते हैं. तो इसीलिए मॉर्निंग में जो है सो लेफ्ट हैंड से आप ब्रश करके कुछ दिन देखो, you will see the difference. आपको जो है राइट ब्रेन वो भी एक्टिवेट होगा. and next thing is it reduce your stress. So reading help you to focusing on words, lines and some sentences. These help to pulling your mind away from stress and make you feel relaxed. क्या होता है ना, जैसे स्क्रीन पर आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या बुक में कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो उतने समय के लिए आप सब कुछ भूलकर उन सेंटेंसेस एंड वर्ड्स के बीच में आ जाते हो. तो somehow you feel relaxed and stress free. So then reading books helps in boosting your sleep. You to fall asleep, de-stress you and also improving your sleeping quality. ऐसे कई बार कहते हैं ना, सोने से पहले अगर पढ़ने लगो तो नींद जल्दी आने लगती है ना, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए नींद अच्छी आ जाती है. सो रीडिंग इज लाइक स्लीपिंग पिल which can lead you into restful sleep. The next is prevent depression. Self-help books can prevent depression. Reading boosts as the part of the brain that deal with depression, and it boosts your brain with happiness and ambitions. है ना, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हैं, अच्छा लगता है. और जब अच्छा लगता है, अच्छी बातें हम सुनते हैं, सोचते हैं, तो फिर वो हमारे माइंड लेवल पर भी असर करता है. Then it expand your vocabulary, of course. आप जब पढ़ रहे हैं तो नए नए शब्द आते हैं सामने, उसका मीनिंग आप समझते हैं. एंड दो टाइप की हमारी वोकैबुलरी भी होती है, एक्टिव एंड पैसिव. बहुत सारे हमें वर्ड्स पता होते हैं, लेकिन जब हम बोलने पर आते हैं, लिखने पे आते हैं, तो वो याद नहीं रहते. बट व्हेन यू रीड रेगुलरली, तो वो जो आपकी पैसिव मेमोरी है, इट बिकम्स योर एक्टिव मेमोरी. तो रीडिंग जो है वो आपको वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है. एंड लास्ट, which is broaden your imagination. Reading helps you to focus
on words, lines and some sentences. कुछ grammatical errors हैं, but उसको हम ignore करेंगे और भावनाओं पे जाएंगे. So these helps to pulling your mind away from stress and make you feel relaxed. तो रीडिंग जो है वो बहुत आई मीन पढ़ना आपको एक्चुअली में कम से कम 5 मिनट एंड मैक्सिमम हाफ एन आवर तो दिन में आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए कुछ ना कुछ. दैट्स इट. कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कहाँ गए सब? हेलो हेलो हेलो. यस मैम. कोई कुछ शेयर करना चाहेगा और वी कैन प्रोसीड. अभी क्या हो रहा है कि एक हैबिट जैसे डेवलप हो रही है टू रीड बुक्स. तो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और बुक्स भी हैं जिनको अभी शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखना और पढ़ना. चलिए पेज नंबर 47 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. अब आ रहा है मेरा स्क्रीन? अभी आ रहा है. And we have to move on to next chapter, which is winners, losers, boomers and busters. तो चलिए संतोष जी से स्टार्ट करते हैं. आज की बुक रीडिंग की शुरुआत संतोष जी करेंगे. Okay, winners, losers, boomers and busters. It takes some time before most traders either throw in the towel or find out the true source of their success. In the meantime, some traders manage to get enough right about trading to enter into what is commonly referred to as the boom and bust cycle. Contrary to what some of you may have inferred from the example of the novice trader, not everyone has an inherently negative attitude and is therefore doomed to lose consistently. Yes, it is true, and some traders do consistently lose, often until they lose everything or quit trading because they can't tolerate any more emotional pain. However, there are also many traders who are tenacious students of the market and have a sufficiently winning attitude going into trading so that in spite of many difficulties, they eventually learn how to make money. But, and I want to emphasize this, they learn how to make money only on a limited basis. They haven't yet learned how to counteract the negative effects of euphoria or how to compensate for the potential for self-sabotage. If euphoria and self-sabotage are two powerful psychological forces that will have an extremely negative effect on your bottom line. But they are not forces you have to concern yourself with until you start winning on a consistent basis, and that's the big problem. When you are winning, you are least likely to concern yourself with anything that might be a potential problem, especially something that feels as good as euphoria. One of the primary characteristics of euphoria is that it creates a sense of supreme confidence where the possibility of anything going wrong is virtually inconceivable. Conversely, errors that result from self-sabotage have their root in any number of conflicts that traders have about deserving the money or deserving to win. It's when you are winning that you are most susceptible to making a mistake, overtrading, putting on too large a position, violating your rules, or generally operating as if you know prudent boundaries on your behavior or are necessary. You may even go to the extreme of thinking you are the market. However, the market rarely agrees, and when it disagrees, you will get hurt. The loss and the emotional pain are usually significant. You will experience a boom following by the inevitable burst. If I were to classify traders based on the kind of results they achieve, I would put them into three broad categories. The smallest group, probably fewer than 10% of the active traders, are consistent winners.
They have a steadily rising equity curve with relatively minor drawdowns. The drawdowns they do experience are the type of normal losses that any trading methodology or system incur. Not only have they learned how to make money, but they are no longer susceptible to the psychological forces that cause the boom bust cycle. The next group, which consists of between 30 and 40% of the active traders, are consistent losers. Their equity curves are mirror images of the consistent winners curves, but in opposite direction, many losing trades with an occasional winner. Regardless of how long they have been trading, there is much about it that they haven't learned. They either have illusions about the nature of trading or are addicted to it in ways that make it virtually impossible for them to be winners. अभी इसको डिस्कस करते हैं। एक जो वर्ड आया है इसको मैंने गूगल किया अभी, ये वर्ड आया था सेल्फ सेबोटाज। इसका मतलब होता है आत्म तोड़ फोड़। यस, अपने मतलब आप को अपने अंदर झांक कर देखना और अच्छे से मंथन करना, आत्म मंथन भी कह सकते हैं इसको। काफी यस। जगह यूज हुआ तो मैंने इसको सर्च किया। हम्म तो इसमें मैम ऑथर वही साइकोलॉजी बता रहा है जो ट्रेडर की कि एक तो जो नोवाइस ट्रेडर जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि when he start winning then he is happy, if he start losing then he or she is unhappy. लेकिन यहाँ पे ऐसा इस चीज के पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि अगर वो ट्रेड जब ले रहा है और ही इज काइंड ऑफ making money in that, then he is happy. But the whatever the study or rules he is applying, he thinks that these rules are perfect in the market. He may change his position, like अभी वो 10,000 का ट्रेड कर रहा है, बाद में वो 20,000 30,000 अचानक वो अब बड़े अमाउंट मतलब पे वो ट्रेड करने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि बिकॉज ही थिंक दैट हिज स्टडी इज वर्किंग इन द मार्केट, और जो वो कर रहा है वही मार्केट कर रही है अपनी स्टडी के हिसाब से। बट ऐसा नहीं होता है हर बार। तो जो भी हमारे रूल्स और मनी मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट के जो रूल्स होते हैं, वी शुड फॉलो दोज रूल्स, वी शुड नॉट गो आउट ऑफ दोज रूल्स। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। राइट। यूफोरिया भी बार बार यूज हुआ है, इसका मतलब उत्साह है, उत्साह, हैप्पी। मतलब वो जो एक आप तुरंत आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है ना पैसे कमाते ही कि भाई मुझे तो आ गया। सो थोड़ा एक और पैराग्राफ नीचे भी पढ़ा था ना हमने, यहाँ पर मुझे कुछ दिखा था। हाँ, द नेक्स्ट ग्रुप, यहाँ से देर आर 3 broad categories. The smallest group, probably fewer than 10% of the active traders, are the consistent winners. तो according to author 10% ही active traders हैं जो consistent winners हैं और consistently profit करते हैं, है ना? And then 30 to 40% of active traders, they are consistent losers. Their equity curves, इसका क्या मतलब हुआ? Their equity curves are mirror images of the consistent winners curve. Okay. But in the opposite direction. Yeah, that is for the winners it will go exponential upside. And for losers it will go downside. Yeah, erode their capital. They either have illusions about the nature of trading or are addicted to it in the ways that make it virtually impossible for them to be winners. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ भी आप भी कंप्लीट कीजिए। Yes, the largest group, the remaining 40 to 50% of the active traders, are the boom and busters. They have learned how to make money, but they haven't learned there's a whole body of trading skills that have to be mastered in order to keep the money they make. As a result,
Their equity curves typically look like roller coaster rides with a nice steady ascent into a steep drop off, then another nice steady ascent into another steep drop off. The roller coaster cycle continues on and on. I have worked with many experienced traders who have put uh, together incredible winning streaks, sometimes going months without a losing day. Having 15 or 20 winning trades in a row is not unusual for them. But for the boom and busters, these streaks always end the same way, in huge losses that are the result of either euphoria or self-sabotage. If the losses are the results of euphoria, it really doesn't matter what form the streak takes. A number of wins in a row, a steadily rising equity curve, or even one winning trade. Everyone seems to have a different threshold for when overconfidence or euphoria starts to take hold of the thinking process. However, the moment euphoria takes hold, the trader is in the deep trouble. In a state of overconfidence or euphoria, you can't perceive any risk because euphoria makes you believe that absolutely nothing can go wrong. If nothing can go wrong, there is no need for rules or boundaries to govern your behavior. So, putting on a larger than usual position is not only appealing, it's compelling. However, as soon as you put on the larger than usual position, you are in a danger. The larger the position, the greater the financial impact small fluctuations in the price will have on your equity. Combine the larger than normal impact of a move against your position with the resolute belief that the market will do exactly as you expect, and you have a situation in which one tick in the opposition direction of your trade can cause you to go into a state of mind freeze and become immobilized. When you finally do pull yourself out of it, you are you will be dazed, disillusioned, and betrayed, and you will wonder how something like that could have happened. In fact, you are betrayed by your own emotions. However, if you are not aware of or don't understand the underlying dynamics I just described, you will have no other choice but to blame the market. If you believe the market did this to you, then you will feel compelled to learn more about the market in order to protect yourself. The more you learn, the more confident you will naturally become in your ability to win. As your confidence grows, the more likely that at some point you will cross the threshold into euphoria and start the cycle all over again. Losses that results from self-sabotage can be just damaging, but there are usually more subtle in nature, making errors like putting in a sell for a buy or vice versa, or indulging yourself in some distracting activity at the most inopportune time or typical examples of how traders make sure they don't win. Why wouldn't someone want to win? It's really not a question of what someone wants because I believe that all traders want to win, yet there are often conflicts about winning. Sometimes these conflicts are so powerful that we find our behavior is in direct conflict with what we want. These conflicts could stem from religious upbringing, work ethic, or certain types of childhood trauma. If these conflicts exist, it means that your mental environment is not completely aligned with your goals. चलिए यहाँ तक पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. Yeah. यहाँ से स्टार्ट किया था हमने बूम एंड बस्टर्स. Yes, the largest group. Okay. Yes. So, इसमें the author is explaining about the psychology or the trades, the way these 40 to 50% of active traders are taking. It's like one day they'll have a good amount of earning, and then after next
they lose that earning whatever they have in the market. It's like a roller coaster ride, up and down चला रहेगा उनका. And जब up जाएगा, then they will be in the euphoria mode. And then जब वो नीचे जाता है, तो वो दुखी हो जाते हैं उससे क्या हो रहा है मार्केट में. राइट. Yes. तो ये दूसरा पार्ट है, दूसरा ग्रुप है ना? Yes. Yes, and author is saying that he has also seen the traders कि जो कम एक ही बारी में 20 से 25 ट्रेड्स जब लेते थे, तो सभी के सभी ट्रेड in a row success होते, because they were using their study properly in the market. कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? One more critical thing which author has explained here कि जब जो novice user or for the person who is in 40 to 50% inconsistency in the market, जब वो ट्रेड करता है, then suppose 2 या ट्रेड जब सक्सेस हो जाते हैं, then he start increasing his position in the market. तो उससे क्या होता है कि जब मार्केट थोड़ा सा भी उसके अगेंस्ट जाएगी, then he will lose most of his capital and then he will start blaming the market. अगर वो मार्केट को ब्लेम करना शुरू कर देता है, then he will again convince himself and try to study something and get his momentum back and again start over again the same thing. राइट. कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा इस पैराग्राफ से अपनी लर्निंग? नहीं. माइंड को फ्रीज कर देता है ना जब ट्रेड अपने अगेंस्ट में जाता है तो. हाँ, राइट. एंड यू बिकम इमोबिलाइज्ड. यस. क्योंकि भाई अल्टीमेटली पैसे जा रहे होते हैं, और वो भी आपने कुछ कहते हैं ना, आपने कुछ फिजिकली खरीदा हो तब पैसे दे रहे तो अलग बात है, और यहाँ तो बस पैसे हवा में जा रहे हैं. और तो आप एक गेम खेल रहे हो, उसमें लूज कर जाते हो. हाँ. सक्सेस मिलता. तो इसी जो डायलेमा है, इसी से हमें निकलना है. यस. So when you finally do pull yourself out of it, you'll be dazed and disillusioned and betrayed, and you'll wonder how something like that could have happened. और तब लगेगा यार ये हो क्या गया, कैसे हुआ ये, है ना? And you will have no other choice but to blame the market. और उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हमें यही बोलना होता है कि भाई मार्केट में आज मेरे पैसे चले गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई थिंक यहाँ से करना है हमें. In other words. पद्मांक तुम पढ़ोगे? ओके, प्लीज. In other words, not all parts of you would argue for the same outcome. Therefore, you can't assume that you have the capacity to give yourself an unlimited amount of money just because you have learned how to trade and the money is there for the taking. A future broker at one of the major brokerage firm once commented that when it comes to his customers, he lives by the motto that all commodity traders are terminal, and it is his job to keep them happy until they are gone. He said this fetishly, but there is a lot of truth to his statement. Obviously, if you lose more money than you make, you can't survive. What is less obvious? And one of the mysterious of being successful. What is less obvious, and one of the mysteries of being successful is that if you win, you may still be terminal, and that is if you win and you haven't learned how to create a healthy balance between the confidence and restraint,
or you haven't learned how to recognize and compensate for any potential you have to self-destruct, you will sooner or later lose. If you are among those in the boom and bust cycle, consider this: if you could, redo every losing trade that was the result of an error or recklessness, how much money would you have now? Based on these recalculated result, what would your equity curve look like? I am sure many of you would fall into the category of consistent winner. Now think about how you responded to your losses when they occurred. Did you assume complete responsibility for them? Did you try to identify how you might change your perspective, attitude, or behavior? Or did you look to the market and wonder what you might learn about it to prevent such a thing from happening again? Obviously, the market has nothing to do with your potential of recklessness, nor does it have anything to do with the errors you make as a result of something internal conflict about deserving the money. Probably one of the hardest concept of traders to effectively assimilate is that the market doesn't create your attitude or state of mind. It simply acts as a minor reflecting what is inside back to you. If you are confident, it is not because the market is making you feel that way. It is because your beliefs and attitudes are aligned in a way that allows you to step forward into the experience, to an experience. Take responsibility for the outcome and extract the insight that has been made available. You maintain your confident state of mind simply because you are consistently learning. Conversely, if you are angry होना चाहिए, मुझे लग रहा गलत है थोड़ा PDF. If you are angry and afraid, it is because you believe to some degree that the market creates your outcome, not the other way around. Ultimately, the worst consequence of not taking responsibility is that it keeps you in a cycle of pain and dissatisfaction. Think about it for a moment. If you are not responsible for your result, then you can assume there is nothing for you to learn. And you can stay exactly as you are. You won't grow and won't change. As a result, you will perceive events in exactly the same way, and therefore respond to them in the same way, and get the same dissatisfying results. Or you might also assume the solution to your problem is to gain more market knowledge. It is always virtuous to learn, but in this case, if you don't take responsibility for your attitude and perspective, then you are learning. यहाँ पर सारा का सारा गड़बड़ है. चलो यहीं से पढ़ो. That will cause you to use what you have learned in inappropriate ways. Without realizing it, you will be using your knowledge to avoid the responsibility of taking risk. In the process, you end up creating the very thing you are trying to avoid, keeping you in a cycle of pain and dissatisfaction. However, there is one tangible benefit to be gained from blaming the market for what you wanted and didn't get. पहले ऊपर ये वो समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हो. ऊपर में कहना यही चाह रहे थे कि ट्रेड का जो पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड है वो हमें हम उस पर हमें बिलीव होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो बिलीफ में हमें रिजेक्ट नहीं होना चाहिए कि ये हम जैसे कि एंट्री किया तो हमें ये अगर हमारा अपोजिट जा रहा है तो हम अपने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. आई मीन इसमें हमें बिलीव के साथ हमें एंट्री करना चाहिए, बट विनिंग हमें एज एन विनिंग बायस नहीं होना चाहिए. और लर्निंग इज ओके, लर्निंग इम्पोर्टेंट है, बट मोर इम्पोर्टेंट है हमारी पर्सपेक्टिव एंड बिलीव अबाउट द एक्शन. राइट.
ये ओवरऑल समरी है, और उसी को दो बार घुमा घुमा के बताया है यहाँ पे। हाँ, एंड हाउ यू माइट चेंज योर पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड और बिहेवियर। तो ओवरऑल पूरा जो गेम है वो पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड एंड बिहेवियर का ही है। एंड एक लाइन और हमने पढ़ी थी, मार्केट इज द मिरर इमेज ऑफ योर थॉट्स। ये आई थिंक यही था भाई। मिरर इमेज इस बार शायद मेरे पैराग्राफ में नहीं था। हाँ, मिरर था, मिरर। नहीं, मैंने नीचे से पढ़ा था ना। नहीं, नीचे पढ़ा है इसके। एक मिनट देखो, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को दिखे तो मुझे रोकना। ये रहा, यहाँ से। It simply acts as a mirror reflecting what's inside back to you, है ना? So that the market doesn't create your attitude or state of mind. वो हमारा, I mean, market is doing nothing with our attitude and state of mind. हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि भाई मार्केट ऐसा चल रहा है या ऐसा हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है हमारे खुद की थॉट प्रोसेस का। एनीवन एल्स शेयर करना चाहिए? संतोष जी, आप कुछ? हेलो हेलो हेलो, कोई शेयर करना चाहेगा कुछ अपनी लर्निंग इस पैराग्राफ पे? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? या वी कैन हियर यू। ओ सॉरी, मैं म्यूट हो गया था शायद। कोई बात। हाँ, मैं कुछ बोल रहा था कि मार्केट में एटीट्यूड मैटर करता है। स्टडी तो क्या होता है कि कैंडलस्टिक जब भी कोई पढ़ाएगा या सर पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे तो समझ ही जाते हैं, लेकिन एटीट्यूड और उसका बिलीफ सिस्टम मार्केट में जब ट्रेड लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कब एग्जिट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है, दैट मैटर्स। और इस पैराग्राफ पे ऐसा बतलाई थे, आप बचपन में छुपन पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते थे ना, आगे आगे कोई दौड़ता, पीछे से हम दौड़ते, तो मार्केट जैसे जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना होता है उसके साथ। जैसे मार्केट ने यू टर्न लिया, आपने भी यू टर्न ले लिया, मतलब भाव को पहचानना। यस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मांक, यहाँ से पढ़ो। यू कैन, कहाँ थे? यू कैन, यही है ना? यू कैन टेम्परली you can temporarily shield yourself from your own harsh self criticism. I say temporary because when you shift responsibility, you cut yourself off from whatever you needed to learn from the experience. Okay. Remember our definition of winning attitude: a positive expectation of your effort with an acceptance that whatever result you get are a perfect reflection of your level of development and what you need to learn to do better. If you shift the blame in order to block the painful feeling that result from the if you shift the blame in order to block the painful feeling that result from beating yourself up, all you have done is put an infected band-aid on the wound. You may think you have solved the problem, but the problem is only going to resurface later, worse than before. It has to, simply because you haven't learned anything that would cause you to make the land of interpretations that would result in more satisfying experience. तो अभी तक ये जो बता रहे हैं यहाँ पे बेसिकली सेल्फ क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन किया है इसमें कि हमारा एक परसेप्शन होता है कि हम सही हैं, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे चांसेस ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग कुड बी वर्स देन बिफोर। तो इसमें इन्होंने एक और चीज बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ विनिंग का मतलब होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ट्रेड में लेने के बाद, द रिजल्ट कुड बी इन आवर फेवर और नॉट इन अपोजिट आवर फेवर, बोथ आर द एक्चुअली द रिजल्ट, है ना। तो दोनों ही केस में हमें उसको एज अ रिजल्ट की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। राइट। और एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा दिया है
कि इन्फेक्टेड बैंडेड ही आपने घाव पे लगा दिया है। तो हम तो सोच रहे हैं कि बिल्कुल ठीक होने वाले हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो और ज्यादा वर्स्ट होने वाला है। है ना? क्योंकि हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला, प्रॉब्लम के ऊपर और प्रॉब्लम में रख दिया एक और। Did you ever wonder why leaving money on the table is often more painful than taking a loss? When we lose, there are any number of ways in which we can shift the blame to the market and not accept responsibility. But when we leave money on the table, we can't blame the market. The market didn't do anything but give us exactly what we wanted. But for whatever reason, we were not capable of acting on the opportunity appropriately. In other words, there is no way to rationalize the pain away. You are not responsible for what the market does or doesn't do, but you are responsible for everything else that results from your trading activities. You are responsible for what you have learned and learned, as well as for everything you haven't learned yet that's waiting to be discovered by you. The most efficient path to discovering what you need to do what you need to do I think this is the line. The most efficient path to discovering what you need to do, what you need to be successful, is to develop a winning attitude, because it is an inherently creative disruptive. Not only कुछ गड़बड़ है इसमें, not only does a winning attitude यहाँ भी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ गड़बड़। एटीट्यूड ओनली हेल्प्स यू टू विन। तो यहीं से पढ़ो, व्हाट यू नीड टू लर्न। What is also produces a land of mindset that is mostly conducive to discovering something no one else has experienced. Developing a winning attitude is a key to your success. Developing a winning attitude is the key to your success. The problem for many traders is that either they think they already have won when they don't, or they expect the market to develop the attitude for them by giving them a winning trades. You are responsible for developing your own winning attitude. The market is not going to do it for you. And I want to be as empathic as I can. No amount of market analysis will compensate for you developing a winning attitude if you lack one. तो मार्केट हमें सिखाता रहता है हमेशा, बट हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब हमेशा सही होते रहेंगे मार्केट में, हम मार्केट ऑब्लाइज करेगा तभी हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। बट इन अदर वे, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि काफी बार मौका होता है हमारे प्रॉफिट बुकिंग करने का, बट हम थोड़ा ग्रीड फैक्टर हो या जो भी हो, यानी हम आते हुए प्रॉफिट को भी इग्नोर करते हैं, अल्टीमेटली वी एंड अप लूजिंग मनी। तो मार्केट कुछ भी छोटी है या बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है, बट वी नीड टू बी अजाइल टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो प्रॉफिट लेना हमारे ऊपर है। अगर हम ग्रीड फैक्टर आ गया तो हम अच्छे प्रॉफिट को भी लूज कर सकते हैं, एंड देन अगेन मार्केट को ब्लेम करेंगे कि हमारे साथ सही नहीं हुआ या मार्केट ठीक नहीं है। राइट। और मुझे लगता है इस बुक के एंड में हम कुछ सीखे ना सीखे, हम ये जरूर सीखने वाले हैं कि भाई टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन, ये इतनी बार बताया है इस बुक में। एग्जैक्टली, हाँ, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। मार्केट इज जस्ट as possible, right as possible. और एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया ना कि आप कहीं पर अपना पर्स भूल जाए, पैसा भूल जाए, तो आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मार्केट में पैसा चला जाता तो पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो आप मार्केट पे, या जिससे भी आपने कोई कुछ सीखा है, या जिससे भी कोई आपने टिप ली हो, XYZ कुछ भी हो, उसको हमने वहां पर, क्योंकि वहां ब्लेम करने के लिए कोई मिल रहा है हमें, राइट। लेकिन जहां पैसे खो गए हमारे, कहीं हमने छोड़ दिए, वहां तो हमें खुद को ही ब्लेम करना है, तो वो हम नहीं करते जल्दी से, राइट, है ना। उसमें हम यही कहेंगे अरे यार गलती हो गई या जो भी है, बट इस केस में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम ब्लेम कर सकते हैं। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
Understanding the markets. Understanding the markets will give you the edge you need to create some winning trades, but your edge won't make you a consistent winner if you don't have the winning attitude. Okay, certainly, one could argue that some traders lose because they don't understand enough about the market, and therefore they usually pick the wrong trades. As reasonable as this may sound, it has been my experience that traders with losing attitude picks the wrong trades, regardless of how much they know about the market. In any case, the result is the same: they lose. On the other hand, traders with a winning attitude who know virtually nothing about the market can pick winners. And if they know a lot about the market, they can pick even more winners. If you want to change your experience of the markets from fearful to confident, if you want to change your result from an erratic equity curve to a steadily rising one, the first step is to embrace the responsibility and stop expecting the market to give you anything or do anything for you. If you resolve from this point forward to do it all yourself, the market can no longer be your opponent. If you stop fighting the market, which in fact means you stop fighting yourself, you will be amazed at how quickly you will recognize exactly what you need to learn and how quickly you will learn it. Taking responsibility is the cornerstone of a winning attitude. चलो आज यहीं तक करते हैं, इसको समराइज करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन। इसमें फर्स्ट लाइन ही सब कुछ बता दी थी, इसने जहाँ बताया था अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। विनिंग मार्केट को समझना से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें अपने विनिंग एटीट्यूड को डेवलप करना। एक पर्सन है जिसकी लर्निंग जो मार्केट को अच्छे से समझता है, बट उसका एटीट्यूड अगर विनिंग वाला नहीं है तो वो बुरे ट्रेड ही पकड़ेगा और अल्टीमेटली वो लूज करेगा। बट अगर किसी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले बंदे का अगर एटीट्यूड विनिंग है तो वो अपनी उस एटीट्यूड की वजह से अच्छे पिक होंगे उसके, और वो बेटर कर सकता है कंपेयर टू जो जिसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की कंपैरिजन में। और साथ ही साथ अगर वो एज अपना वो डेवलप कर लेता है मार्केट के अंडरस्टैंडिंग के साथ, अगर विनिंग एटीट्यूड है आपके पास तो यू कैन डू अंडर, और उसके बाद से मार्केट आपका ओपोनेंट नहीं होगा, आपका साथी बन जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा और वी कैन मूव ऑन टू आवर गोल राइटिंग। I think it's right what it's saying that attitude is more important. Otherwise, you will always blame others. Like others, matlab the market, or Right. your trade not happening, or this is not happening. You'll blame others. You will not understand the problem is within you, not the outside world. And everything lies inside us, isn't it? Yeah, right. तो सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना है हम सबको, isn't it? Yes. Yeah, true. राइट। तो मार्क जी के साथ हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, और कल हम पेज नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, चैप्टर 4 करेंगे हम, कंसिस्टेंसी अ स्टेट ऑफ माइंड। एंड कंसिस्टेंसी this plays a key role in success. 95% is consistency, है ना सक्सेस में। तो कल हम ये एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं अपनी गोल राइटिंग की तरफ। राइट डाउन योर गोल्स एंड ग्रैटिट्यूड विच यू वांट टू राइट। आज पूरे दिन में आपने जो भी अच्छा महसूस किया हो या अभी आप जो भी अच्छा महसूस कर रहे हो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। एंड योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, आफ्टर 3 years आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, एंड आफ्टर 3 months आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। So much. Thank you all and lots of gratitude to all of you. आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर इस बुक रीडिंग सेशन में आए।